अभी एक बैंक की क्लास में आते हैं जिसमें अमाउंट डिपॉजिट करेंगे और विड्रॉ करके देखेंगे और बैलेंस भी चेक करेंगे कितना बैलेंस हमारे पास रिमेनिंग रहता है। एक क्लास बनाते हैं बैंक अकाउंट की। इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। वो पहले बैलेंस जीरो है। एक डिपॉजिट मेथड बनाते हैं। वो बैलेंस को अपडेट कर देते हैं डिपॉजिट करने के बाद। एक विड्रॉ को बनाते हैं। इसमें चेक करते हैं अमाउंट अगर कम है बैलेंस से इस तरह फिर रिमेनिंग बैलेंस का एक मेथड बनाते हैं। इमेज रन करते कर रिमेनिंग बैलेंस।
का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें वो बैंक अकाउंट क्लास को कॉल करते हैं, उसमें ऊपर से नीचे बैलेंस दे देते हैं 1000 रुपीज़। अकाउंट डिपॉजिट करेगा 500 और अकाउंट से विड्रॉ करेगा 200 विड्रॉ करेगा। तो ये मैं प्रिंट करके दिए। इसको रन करते हैं, अपन 1300 उसने रिटर्न करके दे दिए।